अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए है। आज ही होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करें और कैरियर के लिए अनेकों अवसर पाएं। पिछले 10 सालों में रोजगार के अवसर प्रदान करने में अपनी सक्षमता साबित की है। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ऐसी एकमात्र संस्था जिसके द्वारा 5000 से भी अधिक उम्मीदवारों को इंटरनेशनल होटल्स, रिजॉर्ट्स, क्रूज शिप्स में रोजगार दिलाए गए। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, भर्ती जारी है। पता विजयनगरम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। Eventually they will all fuse together and form a patterned hair loss. Okay, though you have hair in the back and this thing, the most the visible part of your personality is the frontal part. Like in Andaman, there is no DEXA scan. We have here DEXA scan. We have laser physiotherapy, जो अंडमान में कहीं नहीं होता है. It is a very painless procedure. Only during the anesthesia, the patient will feel a bit of pain. That is when we inject the anesthesia into the scalp to numb the area. Like near future, I'm talking about. So near future, our aim is to bring lasers and hydrofacial. Okay. Lasers in the sense for hair removal as well as for pigmentation, tattoo removal. नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा से अंडमान में मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर लोग चिंतित रहते थे, लेकिन अब आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे द्वीप में भी आए दिन नए नए क्षेत्र में काम किया जा रहा है और यह जानकर दर्शकों को बड़ी खुशी होगी कि पहली बार अंडमान में हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों द्वारा सफलतापूर्वक हेयर ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया गया। हेल्थ फॉर यू एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां बहुत सारे चिकित्सा के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फिजियोथेरेपी, ईएनटी, हेयर ट्रांसप्लांट, डर्मेटोलॉजिस्ट इत्यादि। डॉक्टर अशोक, डॉक्टर प्रिया और डॉक्टर कुणाल की सहायता से पहली बार इस हेयर ट्रांसप्लांट को कंडक्ट किया गया। ये सभी डॉक्टर्स मेनलैंड से हैं और अपने क्षेत्र में एक्सपर्टीज है और हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपने कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। लोगों को अपनी त्वचा रंग रूप को लेकर बहुत ही चिंता रहती है, तो अब आपके सवालों का हल भी हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रिया, जो कि एक रेसिडेंट डॉक्टर हैं, और डॉक्टर अशोक, जो विजिटिंग डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट में पारंगत हैं। अब आप इन्हें मिल सकते हैं और अपने स्किन, त्वचा, बालों से जुड़े सवालों का हल पूछ सकते हैं। तो आइए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं जंगली घाट के हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में, जहां पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडमान में सबसे पहली बार एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। उसी सिलसिले में हम आज यहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अशोक और डॉक्टर प्रिया, हम उनसे बात करेंगे और साथ में डॉक्टर कुणाल से भी बात करेंगे, जो हमें ये जो पहला सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है इस बारे में हमें बताएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो है ये आजकल मेनलैंड में और फ़ॉरेन बाहर विदेशों में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि बाल खोना कोई नहीं चाहता है, और जब बाल खो जाते हैं दोबारा से बाल आना जो खुशी लाती है, वो उसका एहसास आप सब समझ सकते हो। तो इसके लिए जो अंडमान के जो निवासी थे वो मेनलैंड जाते थे, जिसमें काफ़ी खर्चा होता था, काफ़ी समय जाता था, लेकिन अब वही सुविधा हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक ने आपको अंडमान में ला के दिया है, जिसका आप लोग, हम सब ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे हमारा समय भी बचेगा, हमारे पैसे भी बचेंगे, और जो रिलैक्सिंग टाइम होता है इस हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद में, उसके लिए हमें मेनलैंड में रुकना नहीं पड़ेगा, हम यहाँ अपने घरों में रुक सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जो है अंडमान में बहुत सारी न्यू टेक्निक्स ला रहे हैं। टेक्निक्स इन द सेंस मेडिकल टर्म्स में जो नए जो इलाज के जो तरीके हैं उनको यहाँ पे ला रहे हैं, जैसे लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह हो गया। इसको हम विस्तार से जानने के लिए चलिए हम सीधे डॉक्टरों से बात करते हैं और जानते हैं कि हमारे अंडमान में और क्या क्या नई चीज़ें आ रही है, जिससे हमारे ही यहाँ के निवासियों को फ़ायदा होगा। डॉक्टर कुणाल के पास हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में, और इस हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में हम सीधा उन्हीं से जानते हैं, उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। नमस्कार सर।
हेलो नमस्कार। सो हमने अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्ट्री का सबसे पहला हेयर ट्रांसप्लांट किया संजीवनी हॉस्पिटल में, और दिस इज़ द गोल्डन फेदर इन द हिस्ट्री ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। द फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट हैज़ बीन डन बाय डॉक्टर अशोक, आर विजिटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हिज टीम। सो ये हमने जो चीज़ करने के लिए पीपल यूज टू गो टू मेनलैंड, वो हमने यहाँ पे कर दिखाया। तो और जस्ट नॉमिनल रेट्स में, ऐसा नहीं काफ़ी बहुत ज़्यादा। तो इस मतलब पीपल यूज टू कम लो कॉन्फिडेंस, देन आते हैं हेयर फॉल के इश्यूज़ में कि सर बाल गिरता है, सर बाल का ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है। तो हमारा जो टीम है, तो उन्होंने ये जो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला चीज़ कर दिखाया, जो पीपल मतलब सोच भी नहीं सकते कि अंडमान निकोबार आइलैंड में हो सकता है। सो अभी डॉक्टर अशोक आपको ब्रीफ देंगे कैसे हमने किया है, इसे कैसे मुमकिन किया है। डॉक्टर कुणाल, क्या आप चार्जेस बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? देखिए, चार्जेस डिपेंड करता है ग्राफ्स के ऊपर, कितना ग्राफ्स होता है पर ग्राफ के ऊपर। तो हमने अभी जो पेशेंट को किया है, हम अभी फ़िलहाल अनलिमिटेड ग्राफ्स कर रहे हैं। ग्राफ्स के ऊपर कोई वो नहीं है, जो जितना ग्राफ्स कर पाएँ तो इतना ग्राफ कर रहे हैं। प्लस पेशेंट का कंसल्टेशन फ्री है हमारी तरफ से, और कंसेक्यूटिवली हम PRP ट्रीटमेंट भी करते हैं पेशेंट के ऊपर, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। PRP मीन्स प्लाज्मा रिच प्रोटीन जो होते हैं। तो उसके बारे में अच्छे विस्तार पे हमें डॉक्टर अशोक बताएंगे। He'll let you know. Hello sir, very happy and glad as well to know that the first hair transplantation has been successfully conducted in Andaman Island. So now, like Dr. Kunal said, people will not have to move to mainland for this kind of transplantation. I would be very happy if you could explain to our viewers. Yeah, so hair transplantation is a procedure wherein we just translocate the grafts, I mean the hair from your occipital area and to your frontal area, which we normally lose in men. So if you see androgenetic alopecia or male pattern baldness, which is called as, okay, it primarily is mediated by testosterone, a male hormone. Right. Because of that, what happens, you develop a patterned hair loss wherein you lose the corners as well as you start losing the topmost layer of your vertex, we call it. Okay, eventually they will all fuse together and form a patterned hair loss. Okay, though you have hair in the back and this thing, the most the visible part of your personality is the frontal part. Right. Okay, so what we are doing is we are just translocating the hair from the back and putting it in the front. That's the thing, and this has become recently famous, all over the world for the past 10-15 years. But then this was not available in Andaman. Okay, though people had the knowledge for this, they were not able to afford it because they couldn't go there because they have to wait for few days to get the transplant. Then they have to recover and then come back. So that incurs a lot of expenses, and along with their transport and everything. So it was like a little costlier procedure for them. Though the mainland people could get it done in a cheaper cost, for them it was a cost because it includes the transport as well as the stay over there and everything. And also to get a procedure done in their own land, that gives much more confidence to the patient. So that was the primary aim for us initially. We thought we'll provide this service to the Andaman people because this was lacking initially in the market. We thought we'll just capitalize on that. So initially we were doing some marketing for that, and we got some few patients and we convinced them, and Mr. Venkat, who was our first patient, was ready for the procedure, and we went ahead with it, and it's quite successful, and we'll be noticing the results after 8 months. We did the procedure I think last month around 5th or 6th, I think. Okay, and the procedure went for 2 days. We did almost 4,500 grafts for him. Okay, and that would be around, that's a graft. Every graft will have either a single single hair or 2 hairs or 3 hairs. So roughly we had implanted about 10,000 hairs for him. Okay, hairs. Okay, yeah, but graft is that enough to cover the whole head? Yeah, that is more than enough. So if you see in our normal scalp, सब आपका scalp है ना, उसमें देखे तो it's like per 80 to 100 hairs. Okay, but we just need 30 to 40 hairs in a square centimeter to give you that visual appearance of a good hair. Okay, and here we do play with a little bit of the visibility of your scalp and everything. So that way it can be achieved with a lesser number of grafts. Okay, and he had about grade 4 to 5 baldness. Okay, so with that we just adjusted with 4,500. He might need, or it depends on the patient's satisfaction at last. Okay, if he requires, we might go for another transplant. But then currently whatever we had done, he'll be very much happy with it. Yeah.
So, is it a painful experience? No, it is a very painless procedure. Only during the anesthesia, the patient will feel a bit of pain. That is when we inject the anesthesia into the scalp to numb the area. आप किस भी चीज़ पे किसी भी like if you develop a fracture, before they go inside, they'll give you anesthesia, right? Something like this. But we are not doing any general anesthesia where you lose your consciousness and you don't know what is happening. Here you will be totally conscious, and we are doing it under local anesthesia. It only the pain will be there. It's a very minimal pain. Prick pain will be there during the anesthesia event. After that, the procedure is totally painless. Patient was very comfortable. He was even using his mobile during the procedure. So it was like cakewalk procedure. You can just walk in and just lie down and get the procedure done and go. So there is no consciousness is lost. You know everything what is happening in the OT. So you don't have to worry in any way regarding the pain. It's a very, very comfortable procedure. Okay. But like you said that you'll be seeing the results like after 8 months or something. Yeah. So what happens is that the whatever hairs which we implant, right? Yeah. They will go through something called as telogen shedding. Okay. Whenever there is a trauma to the hair, okay, that is we are taking out hair from its physiological place and replacing it. So it goes through some amount of stress. So what happens? Whatever hair we kept, it will fall off after 2 months. Achha. Yeah. Only the roots will remain in the deep. Okay. They will replenish again and come back. Okay, and that will give you the full head of hair. That will happen only after 6 to 8 months. Okay, so we have to wait for a period of 6 to 8 months to get the proper results. Okay. And you said like you take the hair from the back side. Yeah. And from the same patient, and you take this hair from here and you It's his own implant hair. it. It's his own hair. We are just taking it, and so since the the visibility factor of the back hair, it's like slanted. So even if I'm taking out 10 to 20 hair from square centimeter, it won't be that noticeable. Okay, whereas if I do the same here, it will be noticeable because the light strikes directly. The light doesn't strike here directly, so it won't be that noticeable when I take out. And I don't take it in a very patterned manner. I take it haphazardly, so it looks quite natural. Whatever the hair is, so we just replace over there. That's all. And can you also use hair from another person and use? That is not possible. Okay, it's a allograft. Allograft is like from the same patient. We are doing it. So what about a person who is completely bald and he wants to have a transplantation? Completely bald. That's what when it comes to grade, it's not balding. No, only the grade 6 or 7 is what we call as completely bald, where they lose hair till the the back side also. But still they also will have a strip of hair in the back. We can always do a transplant for them also. But then the result which I will get from a 3rd grade baldness and a 6th grade will differ. Okay. It won't be that thick as the person who has a very lesser grade of baldness. Quite reasonable and very satisfactory answers. And you have explained to the people. Yes, ma'am. How would you like to explain to? As sir told, it's a painless procedure, and we have done first time here, and it is successful. So I think patients can go for it, and like sir has explained all the doubts and about the procedures you asked, right? So what else you want? Were you also the part of the team? Yeah, I'm also a partner She's of a the team. full-time dermatologist over here. Okay. So she is doing all the procedures, every dermatology consultations and everything. So regarding the full-time procedures and all, she can brief you very well. And regarding developments and all, Ashok sir and Priya ma'am can help you to guide all the developments in dermatology wing in our hospital. Yeah, if you please, ma'am. Yeah, we are doing here like daily I'm available except on Sundays, and we are doing procedures like normal dermatological cases, of course medical management of all the cases, and procedures like chemical peels. There are so many peels, types of peels, and the peel selected is based on the patient's condition. So we do all the peels like combination peels, sequential peels, superficial peels, and superficial medium depth. So primarily peels. for melasma and pigmentary conditions we do. And people are getting benefits from that. Yeah. Patients are satisfied. And apart from peels, we are doing procedure for like PRP. Again, it's a procedure for hair as well as for face.
Okay. for facial rejuvenation, for skin tightening, and for scars, acne scars, pimple marks, and like pores. So some people might have dilated pores. For all those, this PRP works best. And there is a thing called vampire facial. It is without injection on face. It is a minimally invasive needling procedure, micro needling procedure, through which micro channels are created on the face, and then we add the patient's own serum on the face that will enter them through the micro channels, and that will help in tightening, skin tightening, and the same results as I told for acne scars and pores or all those things. And we also have recently included periorbital, like dark circles and lip pigmentation problems. All those treatments are done here. Well, how can you avoid dark circles? By makeup or what? Yeah. Because it's from like, you know. You're asking whether to depression. avoid we should apply makeup. Yeah. I mean, It's patient's own choice. Yeah. If they want to use a concealer, they can obviously use a concealer. Exactly. But obviously, if they want to avoid it, like avoid in the sense to treat it, cure it, there is treatment peel available along with serums and creams. Dark circle happens because of less sleep, nervousness, depression, and all this. Yeah, so there are like lot of factors. One is hereditary. From genetically also they might be having, and anatomically also they might have a deep set eyes. You know, the shadow effect we call it, which will make their eyes look little bit darker naturally also. Sometimes it might be because of stressful conditions where they lose sleep. Okay, or they might be wearing specs. That again causes a lot of stress to their eyes. That could be one of the factors. Or they are using a lot of makeup around their eyes. Okay, that can also cause kajal. Those things can also, you know, make this pigmentation a little bit more attenuated. So those times we go for peels. We have some special devices to bring down this pigmentation. So that way you look naturally with a clear eyes. But how often do you have to go for such things? Just 1 or 2 sessions of these peels will bring down the pigmentation drastically down. Yes. Wow. So we have like newer technologies which are there, which is already being done in the mainland, which is not available in this market. So we are just bringing out, we are ready to serve the people of Andaman by bringing in new procedures to them. And you're having enough clients for this? Yeah, we do get enough more clients. The reason for this is for this interview is to make people aware that something is happening like this. Okay, many a patient when they come and they tell me that I don't even know such services are available in Andaman. This is just through your media. We just want to make it like shout out loud that we are available here. And the thing is like we started our dermat wing in March. Sir started as visiting consultant. So at that time people used to come and ask, sir ये भी होता है, sir ये भी इसलिए तो हमें मिलन जाना पड़ता है. तो हमने then we said that नहीं, we are trying to bring everything over here. Like in not only in aspect of dermatology, in orthopedics. Like in Andaman, there is no DEXA scan. We have here DEXA scan. What's that? That is bone marrow mineral densitometer. Okay, that is DEXA scan. So वो क्या करता है कि आपके बॉडी में जो बोन मैरो जो मिनरल डेंसिटी है वो मेजर करता है. और दूसरी है कि हमने along with hair, plasma rich protein in hair, in face. Apart from that, we have plasma rich protein for knee joint also. That is for osteoarthritis. डॉक्टर नीतीश कोरा जो हमारे फुल टाइम ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो करते हैं वो चीज़. ठीक है, यहाँ पे नहीं करीबन हमने बहुत सारी पेशेंट्स को हेल्प किया. अब उसके अलावा वी हैव लेज़र फिजियोथेरेपी जो अंडमान में कहीं नहीं होता है. अंडमान में लेज़र फिजियोथेरेपी फॉर पेन रिलीफ, इंस्टेंट पेन रिलीफ कहीं नहीं होता है. वी डू दैट ऑल्सो. सो हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसा मैंने हमारा बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं वी गिव अ बेटर केयर, जो जिसके लिए पेशेंट को मिलन जाना ना पड़े, जो हम यहाँ पे सुविधा दे पाए. सो जितनी मतलब एडवांस इन मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू गिव ऑल दैट काइंड ऑफ. अभी जो डॉक्टर प्रिया मैम ने बोला वही चीज़ अगर आप हिंदी में बताएं तो क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ दी जो यहाँ पे हो रहा है, तो हमारे जो हिंदी दर्शक हैं उनको भी पता चलेगा. जैसा प्रिया मैम ने कहा कि सबसे मोस्ट कॉमन फेस का प्रॉब्लम होता है पिंपल. मेन होता है पिंपल, दूसरा होता है डार्क आई,
तो कहाँ, देन होता है रिंकल्स, ठीक है, देन होता है स्कार मार्क, देन होता है आपका स्कार मार्क के साथ जो छोटे जो दाना होते हैं, देन द मोस्ट कॉमन जो अंडमान की पॉपुलेशन में है वो फंगल इन्फेक्शन जो वाइट पैचेस जो रहते हैं। तो डॉक्टर अशोक और डॉक्टर प्रिया दे आर वेल वर्स कंसर्न इन दैट, मतलब दे आर टू गुड इन दैट, ऐसा तारीफ ना करूँ बट वो उनका ब्रांच है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या, नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट है डर्मेटोलॉजी में, उसमें आपका एंटी फंगल क्रीम्स चलता है, देन फॉर एक्नी स्कार में एंटीबायोटिक्स चलता है, क्रीम्स चलती है, और जैसा प्रिया मैम ने बोला, अशोक सर ने कहा कि प्लाज्मा रिच प्रोटीन इन फेस, देन माइक्रो नीडलिंग इन फेस। इसमें क्या है, हमारा स्किन का छोटा पोर्स होता है, तो नीडल से उसको खोलते हैं, देन पीआरपी डालते हैं, उससे मसाज करते हैं, वो नेचुरल ग्लो लेके आता है फेस पे, और स्कार भरने में भी हेल्प करता है, ठीक है। देन पीलिंग करते हैं, पीलिंग क्या आता है, हमारा त्वचा का जो ऊपर वाला लेयर है जो डार्क हो जाता है, जो डल हो जाता है, वो केमिकल पील उसके ऊपर हम लगाते हैं, लगा के फिर वो पील होके आस्ते आस्ते पहला लेयर 7 डेज में निकल जाता है। एडेड विद दैट मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करते हैं, तो वो फेस को और ग्लो करता है। तो इन 7 डेज मतलब पेशेंट को काफ़ी डिफरेंसेस दिखाए। यही जो केमिकल पील हमें अभी भी याद है कि हेल्थ फॉर जो मल्टी स्पेशलिटी मेरा मोटो था, हमने फर्स्ट अंडमान में ये मल्टी स्पेशलिटी कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो व्हेन वी बॉट फर्स्ट डर्मेटोलॉजी, वी आर द वन हु गॉट द फर्स्ट ENT स्पेशलिस्ट ओवर हियर, वी आर द वन हु गॉट फर्स्ट साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट ओवर हियर, वी आर द वन हु गॉट द फर्स्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ओवर हियर। इवन बिफोर जी पंत? No, not before G. Okay. No, not before. In the private market. Okay. ठीक है. Right. So then in the private sector basically. Yeah. So उसके बाद तो already Dr. Ashok and Priya ma'am are like seeing more than what to say, like Ashok sir whenever he comes in visit. So he comes for at least 4 to 5 days in every first week of a month. Okay. So he sees near about around 70 to 80 patients. Yeah, and Priya ma'am is also seeing both. So अभी ये जो हम जैसे मैंने बोला था कि PRP and all, so sir 7 days to minimum it comes for the results. Yes. I mean, PRP is like more noticeable. I mean, for hair, you need to do at least 2 to 3 sessions of it. First thing what you'll notice with PRP for the hair is the hair growth. I mean, hair fall will be arrested. Whatever जो भी बाल गिर रहा है वो कम हो जाता है. फिर then you'll notice that the hair texture is improving, hair quality is improving, the thickness is improving. But that will only happen when you take more than at least 3 to 6 sessions is what I usually advise my patients. Then we are planning to get in lasers also. Okay, one of the most thing which we see here is people with unwanted facial hair, especially in women. You will notice that they might have a mustache, they might have a small beard, or they might have hair along this thing. So we have a permanent solution for it. Okay, because hair reduction is a huge market. You know how much people spend on it for waxing, threading. So it's like a huge market, and what we are giving you is a permanent solution, full-time solution, where you can come in for 6 sessions. Your hair will become as nice as your normal facial hair when you see it. It becomes unnoticeable. Okay, so this can be achieved with the laser. This is all technologies which is already available in the mainland. We are trying to bring in them here and to serve the people in Andaman. Okay. So recent developments जो है कि हम अभी और भी बहुत कुछ लेके आने वाले हैं. Okay. जैसा कि Priya ma'am will let you know, like regarding hydra facial we are going to bring, regarding laser treatment, laser hair removal, laser tattoo removal, then और भी बहुत सारी modalities है regarding in laser. वो हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली. सो उसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छा विस्तार से प्रिया मैम बताएंगे. Yeah, so in future, like near future, I'm talking about. So near future, our aim is to bring lasers and hydrofacial. Okay. Lasers in the sense for hair removal as well as for pigmentation, tattoo removal. So many things. First, hair removal lasers are our aim. Yeah. Because there are so many patients already asking for it. Indications like indication unwanted hair growth is the first indication. Right. Okay, or face, particularly for females, or face and this mustache area, beard area. And second indication will be like because of hair, there are some conditions which are associated with hair growth, etc. Follicular conditions like keratosis pilaris or pilonidal sinus.
those conditions like it's very problematic for the patient and painful also pylonodal sinus. So for those conditions, it's not only a cosmetic procedure, it's also a therapeutic procedure. That is not only for cosmetic thing, it as a treatment for other main conditions also, hair removal can be used. So that is main regarding It's hair a permanent solution. It's not something temporary. Because people are like, they'll know the hassle. People who have hair in the face, they know the hassle. They have to go for a function, what and all they have to do. This, what we are giving is a one-time, not one time. So we need to come at least 6 to 8 times in a month. But it's a permanent solution. After that, they'll never get any facial hair growth. Right. Okay, and that's like a very big advantage for them. Because that gives them a lot of flexibility whenever they go for other functions and stuff. So that there is a huge demand for this in this Andaman, and we are trying to feed the demand here. Literally there is nowhere, like it is not available in Andaman at all. Okay. Maybe once you start, then the other private hospitals also come up with that. Like we have Apollo now here. We have Good, at least we got the awareness in Andaman Nicobar. Exactly. Yeah, it's good. Like, at and least competition is always good. competition is always there, and like people will be benefit with that. The things which are not here, it's available in Andaman. Like पहले कोई सोचा ही नहीं था कि ऐसा पील होगा, कॉस्मेटोलॉजी का हेयर ट्रांसप्लांट होगा, तो वो हुआ, हमने कर दिखाया. तो ऑब्वियसली आगे फ्यूचर में हम ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी, नया मेडिकल एडवांसेस यहाँ लेके आने. ओके. डॉक्टर कुणाल, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो और आगे फ्यूचर में भी जो आप लाने वाले हो, इस बारे में हमारे दर्शकों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया. ये मीटिंग ख़त्म करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये आम जनता के लिए अफोर्डेबल होगा या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, यही लोग आपके क्लाइंट्स होंगे? नहीं, ऐसा क्लाइंटेज हमारा आम जनता से भी लेके अपर एंड मिडिल सब है. तो हमारा जो रेट्स है दैट इज़ वेरी नॉर्मल. अब यहाँ से मिलियंस का रेट कंपेयर कर लो, कहीं भी कंपेयर कर लो, हम जो रेट्स में काम करते हैं तो दैट इज़ वेरी नॉमिनल. और जैसा पेशेंट कोई पेशेंट ऐसा भी आता है कि सर प्लीज़ डिस्काउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वी आर ओके विद दैट, नो प्रॉब्लम. पीपल शुड गेट द ट्रीटमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट तो पेशेंट को मिलना ही चाहिए, कोई भी चाहे कैसा भी हो. और कई जगह पे हमने नोटिस किया है कि आप लोग कई जगह पे फ्री कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हो लोगों का अवेयरनेस के लिए, और ट्रीटमेंट के साथ आई गेस एक बार आप लोगों ने अलॉन्ग विथ फार्मेसी ऑर्गेनाइज किया था, लोगों को दवाएं भी दी थी. देखिए, हम रेगुलर फ्री कैंप्स करते हैं विद फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन. तो हमने मई जून जुलाई मंथ में किया है. जो हमारा जो बेसिकली पाइपलाइन है, मतलब जो पाइपलाइन में काम करते हैं, जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, एवरी 6 मंथ्स हम फ्री कैंप्स करते हैं. तो अभी मई जून में हमने पहला फ्री कैंप्स किया था, मंगलूटान में किया, विम्बलीगंज, तुष्णाबाद, ये एरिया में किया था. अभी नेक्स्ट 6 मंथ हो जाने के बाद हम अगेन वी आर प्लानिंग राइट नाउ, अगेन विल रोटेट दैट साइकिल. सो वी अगेन विल गो एंड डू फ्री कैंप्स विद फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन. जिस तरीके से आपने सुना डॉक्टर कुणाल ने बहुत अच्छे तरीके से हमें सारे फैसिलिटीज़ के बारे में यहाँ पे बताया, और प्राइजेस को लेकर भी काफ़ी अफोर्डेबल है, आम जनता के हित में होगा. तो हम भी आपसे अनुरोध करेंगे कि अब अगर ऐसी कोई भी तकलीफ जो इन्होंने यहाँ पे बताई है ट्रीटमेंट्स के बारे में, अगर आप उनसे जूझ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा. कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7. नमस्कार. तो अब आपको कहीं भी और कभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेनलैंड जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर हमारे पोर्ट ब्लेयर के हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध है. तो एक बार फिर हम सबकी तरफ से हेल्थ फॉर यू के सभी डॉक्टर्स, स्टाफ और कर्मचारियों को तहे दिल से धन्यवाद और बधाइयाँ देते हैं, जिन्होंने हमारे द्वीप के वासियों के लिए इतनी अच्छी सुविधा प्रदान की है. इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ. नमस्कार. Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764.